Hello, good morning, students. In the earlier lectures, we discussed what is perfect competition, what are the characteristics or features of perfect competition, and we have also discussed the average revenue curve or demand curve of perfect competition. Why the curve is parallel to x-axis? Because firm can sell any number of units with prevailing price in the market. It has not to lower the price, it has not to reduce the price. Therefore the curve is parallel to x-axis, and this is the reason why average revenue and marginal revenue are equal. In this video lecture, we are going to discuss equilibrium of a firm under perfect competition. हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे. उससे पहले ये समझेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है. व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन. गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस, पोजीशन ऑफ नो चेंज. Firm has no tendency to change its organization. Firm has no tendency to increase the level of output or decrease the level of output. वहां बना रहना चाहता है. हाँ, that is known as equilibrium, position of no change, state of balance. So what are the basic condition? Two basic condition of equilibrium of a firm in perfect competition and other markets also. Okay, वो मार्केट में भी कंडीशन तो यही रहेगी. First is equality of marginal cost and marginal revenue. Marginal cost should be or must be equal to marginal level. This is the first condition. MR must be MC. What is the reason? So long as or as long as marginal revenue is higher or greater than marginal cost, firm can earn profit and firm has tendency to increase output. On the contrary, if marginal revenue is less than marginal cost, firm can incur losses and firm has tendency to reduce output. So firm can be in equilibrium position. It can earn maximum point only at the point where marginal revenue is equal to marginal cost. Okay, I think point is not clear to you. हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि what is marginal revenue? Revenue can be obtained by sell additional unit. What is marginal cost? Cost of producing an additional unit or change in total cost when additional unit is produced. Suppose firm 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है, उसका टोटल रेवेन्यू है 100, टोटल कॉस्ट है 90. ओके, नाउ फर्म प्रोड्यूसेस 11th unit. Total revenue changed from 1 to 120 and total cost increased from 90 to 100. So this is the difference. So अपने एग्जाम्पल में, दिस एग्जाम्पल में मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस. मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? डिफरेंस कितना है? 20. या टोटल कॉस्ट इंक्रीज फ्रॉम 90 टू 100, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना है? 10. Here MR is greater than MC. So firm, obviously firm will not stop here. Firm has interest to increase the level of output. Why? Because it's earning profit. Okay, suppose 12 unit produce कर रहे हैं. We are not talking about total revenue and total cost. We are talking about marginal cost and marginal revenue. Listen, 120 to 140 and this is 100 to 120. Yeah, 120 to 140 मतलब मार्जिनल रेवेन्यू डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20. 100 to 120 कितना होगा? 20. MR is equal to MC. This is an equilibrium situation. Firm should stop here. Okay, क्योंकि now cost is increasing. उससे अगर आगे जाते हैं मतलब 30, here 1, suppose 160 and this is 130 to 150. 140 to 160 मतलब डिफरेंस कितना है? 20 and this is 30.
here marginal revenue is less than marginal cost or marginal cost is greater than marginal revenue. So obviously फर्म को क्या होगा, लॉस होगा. पर यूनिट जो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है वो एडिशनल यूनिट से मिलने वाली रेवेन्यू से कम है. गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑब्वियसली फर्म को लॉस होगा. सो फर्म कहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, when marginal revenue is equal to marginal cost. Getting my point? So the first and the basic most important condition is marginal revenue must be equal to marginal cost. Why? Because as long as firm MR is greater than MC, firm has every tendency to increase the level of output or change the level of production output. And if marginal revenue is less than marginal cost, obviously firm will reduce its output. So firm can earn maximum point at the point, or firm will be at equilibrium position or stable position only at the point where marginal revenue is equal to marginal cost. This is the first condition. Okay. Now second condition. Marginal cost curve should cut marginal revenue from below, not from above. So ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो नेसेसरी कंडीशन है, बट इट इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन. द सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, एमआर कर्व शुड कट एमसी कर्व फ्रॉम बिलो नॉट फ्रॉम अबव. ओके, you can observe from the diagram that x axis represents output, y axis represents output. This is OA output. Here MR and MC are equal at C point. Here also at OB output, MR and MC are equal at D point. So which point should be considered as equilibrium point? Equilibrium point कौन सा है, whether C point or D point? Equilibrium output कौन सा है, OA output और OB output? Okay, वो फर्स्ट कंडीशन से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते. सो फर्स्ट कंडीशन इज अ नेसेसरी कंडीशन बट इट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन. हमको सेकंड कंडीशन भी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो नॉट फ्रॉम अबव. क्यों? वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. सपोज एट OA आउटपुट हियर marginal cost curve cuts marginal revenue from above to below. Equilibrium का मतलब क्या है, position of no change, state of balance, no tendency to change the level of output. मगर this equilibrium point and this equilibrium output will not be stable, it cannot be sustained. What is the reason? Because उससे ज्यादा हम प्रोडक्शन जितना करेंगे हमको प्रॉफिट होने वाला है. सपोज यहाँ से हम लोग प्रोड्यूस करते, आउटपुट इंक्रीज करते, डॉटेड लाइन से हम लोग सपोज वी आर ट्राइंग टू एक सपोज P Q and R. This is OR output. Here cost is PR, revenue is PR, cost MC, while cost is QR. So this is the profit. Getting my point? MC, yeah, this is AR curve as well as MR curve. So this is marginal cost PR. This is marginal revenue QR. So firm is increasing, firm is earning profit. So why should firm stop here? Okay, firm output और बढ़ाएगा. क्यों? This is not equilibrium point. Even though marginal revenue and marginal cost are equal here. क्यों? Because second condition नहीं fulfill हो रही है यहाँ. Marginal cost curve should cut marginal revenue curve from below, not from above. So this equilibrium position will not be sustained, it is not stable. In short, समझो, equilibrium point is in a one sense, आप लोगों ने ऐसा कभी सुना नहीं होगा, this is my point of view, it's kind like that, it is a opposite of break even point. What is break even point? Where no profit, no loss position. It is the point where the loss stops and profit starts. Equilibrium point is the point where the profit stops and loss starts. I'm repeating. Break-even point क्या है? Where loss stops, profit starts. Here, profit stops and loss starts. We will try to understand.
So why B is an equilibrium output or D is an equilibrium point? It is stable. यहां से फर्म को ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. इफ फर्म ट्राइज टू प्रोड्यूस, सपोज वी हैव हिपोथेटिकल सिचुएशन, हम लोग का कोई भी नाम दे देते, जे के एल, ओएल आउटपुट. ओके, यार कॉस्ट कितना है, जे एल, आउटपुट रेवेन्यू कितनी है, दिस इज द पॉइंट. सो ये क्या हो जाएगा, लॉस्ट. गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज द पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पोजीशन वेयर प्रॉफिट स्टॉप्स एंड लॉस स्टॉप. यहां आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, उससे ज्यादा अगर आप प्रोड्यूस करेंगे यू डेफिनेटली इनकर लॉसेस. ओके, दैट इज व्हाई दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी स्टेबल. ओके, सो व्हाट क्या समझना है आपको कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. एट द सेम टाइम marginal cost curve should cut marginal revenue from below, not from up. Okay, the concept समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ. So I'm repeating कि what is equilibrium condition? Equilibrium position of no change, state of balance. Firm has no tendency to change its organization, no tendency to change the level of output. Okay, what is the first condition? Marginal revenue must be equal to marginal cost. It is necessary condition but not sufficient condition. Second condition क्या है? Marginal cost curve, MC curve should cut MR curve from below, not from above. Why? क्योंकि जो above से cut करेगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल नहीं रहेगी. ओके, सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. आज के लिए इतना रहेगा. थैंक यू वेरी मच.